आज हम टेस्ट करने वाले हैं Realme का 320 वॉट सुपर सोनिक फास्ट चार्जर। मतलब नाम सुनकर ही सारा सिस्टम मिल जाता है। तो ये देख रहे हो आप, ये है Realme का कूल टेक टूर और वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हो भाई, ये है Realme का फैक्ट्री, जहाँ पर आप जो Realme का स्मार्टफोन यूज करता हो वो यहीं पे बनता है भाई। आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो इससे पहले आपने देखी ना होगी और आपने कभी सोची ना होगी। तो सबसे पहले भाई अंदर जाने से पहले हमें ये पहनना पड़ेगा फॉर सेफ्टी। तो ओके, दिस इज रेडी। दूसरे पैर का अरे 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 भाई, राइट, सो दिस इज भाई, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मतलब जो फोन आप यूज करते हो उस फैक्ट्री में हम हैं अभी। दिस इज सीरियसली वाओ। स्मार्टफोन असेंबल होने के बाद जो मेन टेस्टिंग आता है, रियल लाइफ टेस्टिंग, वो है रिलायबिलिटी लैब, मतलब रिलायबल टेस्टिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, रिलायबल टेस्टिंग में ये डिफरेंट टेस्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे रेन टेस्ट हो गया, सॉल्ट स्प्रे टेस्ट हो गया, एनवायरमेंट वर्क हो गया, कॉस्मेटिक टेस्ट हो गया। अब मैं आपको एक्चुअल में रियल लाइफ में टेस्टिंग कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। सो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले रियल लाइफ टेस्टिंग में आता है भाई ड्रॉप टेस्ट, जो हम करते हैं ना भाई, डिफरेंट फोन्स गिराते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आते हो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो रहा है ड्रॉप टेस्ट। तो ये देखो भाई, ये एक बार गिराया इन्होंने। अब जो देख रहे हो भाई, ये मार्बल सरफेस है। तो भाई अब हम करने वाले हैं अपने खुद की टेस्टिंग। तो भाई हम बैठ गए हैं और हम टेस्ट करने वाले हैं ये। तो ये तो फोन चिपक गया है एंड लेट्स गो। वो एंड अगर मैं फोन को देखूं, ये देखो भाई, कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो क्या बात है। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ भाई, नेक्स्ट कौन सी टेस्टिंग होती है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट एंगल में इनको मल्टीपल हजारों बार ऐसे ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर Realme 13 Pro Plus है और इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट किया जा रहा है। देखो, शायद जान के आपको हैरानी होगी भाई, 14,000 बार इस फोन को ऐसे ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्टिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो चार्जर है भाई, टाइप सी चार्जिंग है। देखो, चार्जिंग टेस्ट किया जाता है। ये देखो भाई, इसे अंदर बाहर किया जाता है। अभी आप ये जो देख रहे हो भाई, ये एक वायर टेस्टिंग है, जहाँ पर हम भाई कई बार होता है ना, फोन को ऐसे लटका के रख देते हैं। लटकाने की आदत है यार। इसको करीब 5 से 6,000 बार टेस्ट किया जाता है। और ये देखो हर सेकेंड ये मूव कर रहा है यहाँ पर। और इसके नीचे आप ये जो देख रहे हो भाई, ये वेट, एक स्पेसिफिक वेट भी यहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि जब आप फोन को ऐसे लटकाते हो ना, तो भाई फोन एकदम से गिरे ना, या फिर खराब ना हो, या फिर चार्जिंग जो केबल है वो टूटे ना। यहाँ पर अभी ये जो देख रहे हो भाई, ये टाइप सी की टेस्टिंग हो रही है, जहाँ पर आप केबल लगाते हो तो उसको खींच के थोड़ा सा ऐसे देखा जा रहा है, ताकि जो टाइप सी पोर्ट है भाई वो खराब ना हो। और इस टेस्टिंग को करीब भाई 1000 से 1500 बार किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है, आप ये जो वॉल्यूम बटन देख रहे हो भाई, ये पावर बटन हो गया, ये वॉल्यूम बटन हो गया, वो यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। ये देखो, जो वॉल्यूम बटन है भाई, उसको करीब 1 मिलियन टाइम्स यहाँ पर प्रेस किया जाता है। जो पावर बटन है करीब उसको 2 मिलियन, ताकि जो वॉल्यूम बटन है, पावर बटन है भाई, वो खराब ना हो। तो इतनी रिलायबिलिटी टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट जो टेस्टिंग की जाती है वो उन लोगों के लिए जो लोग अपना फोन पीछे पॉकेट में रखते हैं भाई, तो उसके लिए भाई यहाँ पर एक सॉफ्ट प्रेस टेस्टिंग की जा रही है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि भाई फोन एक्चुअली में इसके अंदर है, ताकि जब आप ऐसे लेके बैठते हो तो जो फोन है भाई वो बैंड ना हो, टूटे ना, इसकी भी टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट जो टेस्टिंग की जाती है भाई, वो है बेंड टेस्ट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे भाई, फोन को ऐसे ट्विस्ट किया जा रहा है हल्का हल्का। ये देखो, कमर हिला रही है। देखो, आहा, ओहो, क्या बात है। अब आप सोच रहे हो भाई नेक्स्ट टेस्टिंग क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टेस्टिंग जो होगा वो होगा भाई टेम्परेचर टेस्ट, जहाँ पर फोन को -डिग्री में फ्रीज किया जाएगा और फोन चलेगा या नहीं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आज मैं आपको दिखाता हूँ भाई फोन ये कहाँ पे फ्रीज किया जाता है। ये देखो भाई, यहाँ से फोन निकाला जा रहा है। ये देखो Realme का ये फोन है और इसको -50 डिग्री में यहाँ पे जा रहा है। ये देखो भाई, पूरा जम गया यहाँ पर। व्हाट अ फील, वाह भाई, फोन पूरा ये फ्रीज हो चुका है। ये देखो, नेक्स्ट जो टेस्टिंग होता है भाई, वो होती है फोन की वाटर टेस्टिंग। मतलब आप बारिश वारिश में जाते हो, फोन को यूज करते हो, फोन भीग ना जाए, गीला ना हो जाए, खराब ना जाए, उसकी टेस्टिंग भी की जाती है। तो आप देख सकते हो भाई, वो सारी टेस्टिंग यहाँ पे होती है, जहाँ पर फोन पे देखो पानी गिरा जा रहा है डिफरेंट एंगल से। अब आप सोच रहे हो भाई हीटिंग टेस्ट कहाँ पे होता है, तो ये देखो भाई, यहाँ पर होता है, और वो भी इस टेम्परेचर पे 75 डिग्री सेल्सियस पे ये टेस्ट हो रहा है। और करीब 21 दिन तक इस फोन को अंदर रखा जाता है। एक सेकेंड यार, 21 दिन में तो पैसा डबल हो जाता है। फोन अंदर रखा हुआ डबल होगा क्या? ये सोचने वाली बात नहीं है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर 4 घंटे से बारिश हो रही है और अभी हम जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए Realme का फास्टेस्ट 320 वॉट सुपर सोनिक फास्ट चार्जर। 320 वॉट सुन के बॉडी में भाई करंट सी आ गई है। लेट्स गो। आज हम टेस्ट करने वाले हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट चार्जिंग टेस्ट। लेट्स गो। वो
ये देखो भाई चार्जिंग स्पीड कितना फास्ट हो रहा है, सेकंड्स की तरह ये मूव कर रहा है। 1 मिनट के आसपास इसने करीब 25% चार्ज कर दिया है। 50% करीब 1 मिनट 59 सेकंड्स के आसपास चार्ज कर दिया इसने। दिस इज सुपर फास्ट। $98, $99 and $100। आप देख सकते हो 4 मिनट 27 सेकंड में फुल चार्ज कर दिया। इसके पीछे की चार्जिंग टेक्नोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो बैटरी यूज की गई है वो 4400 मिली एम्पियर की बैटरी है। एंड इसमें जो बैटरी यूज की गई है भाई उसको सैटेलाइट की तरह जिस तरह फोल्ड करते हैं वैसे ही इस बैटरी को फोल्ड किया गया है ताकि फोन को और ज्यादा पतला और स्लिम बना सके। और Realme ने इसमें वर्ल्ड का फर्स्ट फोल्डेबल बैटरी यूज किया गया है। और इसके पीछे टेक्नोलॉजी है 4 सेल चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जहां पर बैटरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिससे फोन पतला हो लेकिन इसके साथ फास्ट चार्ज भी हो। एंड आप देख सकते हो ये जो चार्जर है फुल फोन को 100% सिर्फ 4 मिनट 27 सेकंड में चार्ज कर देता है। एंड दिस इज सीरियसली वाओ। एंड ये सुन के भाई सीरियसली मेरे को चक्कर आने लग गए। ओके सो आज हम 320 वाट सुपरसोनिक फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, तो उसका राइट आंसर देने के लिए आज हमारे साथ हैं फ्रांसिस, ग्लोबल हेड मार्केटिंग। तो हाय फ्रांसिस, वेलकम टू माय चैनल। Nice to meet you, Manoj, and very happy on your channel. Yeah. So say something about India. Namaste, gaise ho, India. नमस्ते नमस्ते, सभी लोगों को नमस्ते कह रहे हैं फ्रांसिस, स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो आज हम कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स निकालने वाले हैं फ्रांसिस के साथ। सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दैट व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड to enable 320 watt fast charging? Yeah, so first of all, we've launched the world's first foldable battery. So basically now we are putting, in the early days, we are just using one of the battery essence to build a battery. Now we are having 4 batteries. So the battery essence from 1 becomes 4. So the more the battery sensor, the battery essence, the more charging capabilities they can do. Basically you are charging 4 batteries at the same time. So it becomes faster. Well, another thing we've used is we've built a rocket voltage transformation system. With this transformation system, significantly reduce the voltage that the battery is taking, so it will reduce the heating situation. Another technique we used is called air gap voltage transformer. So with this air gap, with this technology, we can ensure that even in case of the severe fault, like for example circuit breakdown, the voltage at the input end will not to transfer to the battery end, so it will to ensure nearly zero risk charging link. So the key to this technology lies in the zero contact circuit design. Unlike the post charge pump solutions, this solution incorporates the electronic mechanical isolation, so it ensuring the better safety. On the one hand, we're putting the batteries to design the battery in a different way. On another side, we will put a new charger, which is right now the world's highest power Destiny charger. So it's not a big charger, it's a small charger, but it charges very fast. Okay, thank you for that answer. आप देख सकते हैं इन्होंने पहले 150 वाट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस किया था, देन इन्होंने इंक्रीज करके 250 वाट पे गए और अब इन्होंने वर्ल्ड का फास्टेस्ट चार्जिंग लॉन्च कर दिया है 320 वाट। आई वांट टू आस्क यू व्हाट precautions are taken to ensure the longevity of the battery, considering the repetitive charging degrades its performance? Yeah, so actually whenever we are launching a new smartphones, we need to do a lot of testing. So one of the most important testing for any of the battery is that how many times it can be charged before it started reducing the battery capability. Users tends to find out that after 2 to 3 years, the battery of the phone is not as lasting as before. That is the difference was caused because before we launched the phone, how many runs of the testing we've done. So for example, right now for this phone we were launching with 320 watt, the battery can be charged 1,600 times. So 1,600 times is highest standard in the industry. So basically, if you charge a phone 2 times in 1 day, then it lasts for 800 days. So it's long enough. So actually, Realme has always been very strict in terms of choosing the battery suppliers and doing the testing. So for example, on the C series, most of the brands are
finishing the testing between 800 times to 1000 times, where Realme always keep that at 1200 times. So we've always been leading in that way. That is one of the things we've been doing. Another thing is because this is the 4D battery and this 320 watts. So with this special designed battery, the charging efficiency becomes 4 times higher. Each time you charge the phone, the damage caused to the battery is 4 times lesser. इसको मैं थोड़ा सा और आपको सिंपल वे में समझाता हूँ. यहाँ पर लॉन्जिविटी के लिए इन्होंने बेसिकली क्या किया, बहुत सारी मल्टीपल इन्होंने टेस्टिंग की है. टोटल 1600 इन्होंने चार्जिंग साइकिल्स दिया है, जहां पर अगर आप दिन में 1 से 2 बार अगर चार्ज करोगे फोन को तो अप टू 800 डेज तक, मतलब करीब 3 साल तक भाई आपकी बैटरी को कुछ नहीं होगा. सेम आपकी बैटरी की हेल्थ रहेगी, विच इज गुड. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर योर प्लान्स फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया? लाइक there are 3 areas that Realme will be focusing on. One is we focus on the AI front because AI is a big new trend. Another is on the camera. As you can see, Realme 12 Pro series, the camera has been improved a lot. Now on Realme 13 Pro series, the camera is consistently performing very well. I can say that in terms of word of mouth and the customer reviews, I think Realme's 12 Pro series has been one of our best performing camera phone in the past. Definitely. If you look at the reviews on the Flipkart, we are rating at 4.5, 4.6. It's on the camera front, it's extremely, the performance or the reviews are very positive. So I think that's something we need to insist. Processor is something we're gonna focus more. okay, so basically saying that you are focusing on Realme 13 series. My main question is Realme just launched Realme 13 Pro series. Amazing, fantastic camera phone. I loved it. Thank you. In terms of camera, fantastic. So my question is that are you guys planning to launch Realme 13 number series? Because in India, Realme 12 Plus was very hit phone and even I loved it, especially the camera part. So anything about Realme 13? On the Realme 13 series, I think one change we're gonna make is that in the past we've been launching Realme 12 Pro series and Realme 12 Plus both on the camera front. Now this time Realme 13 Pro Plus will be more towards the camera front, where Realme 12 series were more towards the performing front, more focusing on the gaming experience, the processor, and we will try to launch a phone with a higher RAM, bigger memory, and faster charging, and a better processor. VC cooling system is something we specially added for 13 Plus series. We want to basically build a phone which is for the demands of the consumers who is prefer to use the phone for the multitasking and for the heavy games. Okay, so basically क्या कह रहा है भाई, Realme 13 Plus जो सीरीज होने वाली है वो परफॉर्मेंस फोकस होने वाली है, जहां पर परफॉर्मेंस पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है. तो समथिंग कुछ एक्सक्लूसिव अगर निकल सके तो भाई मजा आ जाए. पूछते हैं एक बार फ्रांसिस से, कैन वी शो लाइक समथिंग एक्सक्लूसिव अबाउट द 13 Plus? So for 13 Plus, I think it marks change for Realme, that is to position the number series as a performance phone, right? So when we are talking about performance, what are the symbols of the performance? We talk with consumers, they say if you want to launch a performance phone, you should have a big memory, a higher RAM, higher ROM, and you should have a good processor, you should have a fast charging capability. Those 3 fronts are what we've been working a lot, and I think we've also talked with a lot of young gamers in India who prefer to play mobile games a lot. We asked them what are their pain point when they are playing the games. They say they don't like game to be lagging, they hate charging the phone when they are playing the games, and they don't like the phone is getting heating a lot. So I think to solve these problems, we need to improve gaming FPS, right? So we've worked with those mainstream gaming brands to try to launch 90 FPS to make sure the 90 FPS is totally equipped with number series. Basically what are you saying that Realme 13 Plus will support 90 FPS gaming? It will be one of the first phone in the market Wow, that support that's crazy, all I those think. mainstream games. Also, we need to make sure the fast charging capability is up to the mark. The processor is the best in the segment, and with the bigger RAM, even higher than the users are expecting. So if possible, can we disclose the name of the processor? The processor name is something we cannot tell at this now, but when you're doing the unboxing, I think all of your followers will be Wow, knowing. I think that's great. Let's do it. So, like I mentioned, I want you to Wow. unbox this phone. And Wow. one thing special, 13 Plus, and one thing special, you can see on the box, it is Wow. having QV mobile free, lag-free great. gaming certificate. ग्रेट. सो गाइस, ये है Realme 13 Plus का बॉक्स का फर्स्ट लुक. अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं फ्रांसिस के साथ. ये ऑनर जो हमें दिया अनबॉक्सिंग करने का फर्स्ट, आई थिंक दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव. सो ओहो वाओ, कैन आई शो द फ्रंट? Yeah, no problem. दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ Realme 13 Plus 5G. देखो भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. अगर आप सामने से देखोगे इसके जो बेजल्स वगैरह है, वाओ. सो ये था इसका फर्स्ट लुक. इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में ऑब्वियसली बात करेंगे. अभी के लिए बस मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ. तो थैंक यू सो मच फ्रांसिस फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ग्रेट टू हैव यू
on my channel. Great to having the conversation with you. Chalo, all the friends. Chalo. Nice.